Example 3 of our NCERT book. Here, L be the set of all lines in a plane, and R be the relation in L defined as L1, L2, means ordered pair of L1, L2 is such that L1 is perpendicular to L2. Means relation is what? A line is perpendicular to another line. We have to show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. First of all, we try to prove, we check out for the reflexive. Reflexive में क्या होना चाहिए कि L1 should be the image of L1. L1 की इमेज जो है वो L1 ही होना चाहिए. But not two lines are perpendicular to each other. दो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है. मीन्स L1 cannot be perpendicular to L1. L1 cannot be perpendicular to L1. So L1 comma L2 not belongs to R. And L1 L2 means L1 की इमेज L1 नहीं हो सकती. मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब इन अ सेट द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेट एलिमेंट इटसेल्फ. उस एलिमेंट की इमेज वापस वही एलिमेंट हो जाना चाहिए. तो यहाँ ये कंडीशन फेल हो रही है. इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. दूसरी बात करते हैं हम सिमेट्रिक. तो यस, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L. ठीक है, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं विच आर बिलोंग्स टू द सेट गिवन सेट L. ओके, इफ L1 L2 दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R. अगर ये R से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इंप्लाई व्हाट? अकॉर्डिंग टू द रिलेशन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. सो L1 इज perpendicular to L2. Okay, L1 L2 belongs to R means this L1 is perpendicular to L2. If L1 is perpendicular to L2, then L2 will be perpendicular to L1. So this implies L2 is perpendicular to L1. If L2 is perpendicular to L1, means L1 belongs to R. This implies L2 comma L1 belongs to R. And if L2 L1 belongs to R, means what? R is symmetric. Means what we conclude? R is symmetric. Now the last one. ओके, यहाँ फर्स्ट के लिए हमने चेक कर लिया या सेकंड के लिए चेक कर लिया. मीन्स सिमेट्रिक के लिए चेक कर लिया. अपन थर्ड जो केस लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए. अपन चेक करते हैं कि वेदर दीज आर ट्रांजिटिव और नॉट. सी, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ L1 बिलोंग्स टू मीन्स इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, मीन्स हमें ये प्रूव करना है कि L1 L2 जो है वो अगर R के बिलोंग्स कर रहा है और L2 L3 बिलोंग्स टू R, देन L1 बिलोंग्स टू L3 मीन्स L1 L3 बिलोंग्स टू R. ठीक है, मीन्स L2 इज इमेज ऑफ L1 एंड L3 इज इमेज ऑफ L2, देन L3 विल बी इमेज ऑफ L1. ये प्रूव करना है. तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? L1 L2 बिलोंग्स टू R मीन्स L1 and L2 आर परपेंडिकुलर एंड हियर L2 and L3 आर परपेंडिकुलर. मीन्स L2 is common, means L1 and L3 both are perpendicular to L2. But we have a concept that two lines which are perpendicular to a line are parallel to each other, not perpendicular. तो ये L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है.
तो L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये L1 और L3 both are perpendicular to L2 and two lines which are perpendicular to the same lines are parallel to each other. ठीक है, तो parallel lines cannot be perpendicular. Okay, so here the same thing I am going to write here. For all L1 L2 L3 belongs to L. If L1 L2 belongs to R, means L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. Okay, so we know that two lines perpendicular to a line are parallel to each other. इसका मतलब L1 is parallel to L3. दोनों पैरेलल तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती. दिस इम्प्लाई L1 cannot be perpendicular to L3 and this imply L1 comma L3 does not belongs to R. And if L1 comma L3 does not belongs to R means what? This imply R is not transitive. R is not transitive. This relation is not transitive relation. Next example, example number 4. Here we have to show that the relation R in the set of element 1, 2, 3 and it is given by 1, 1, 2, 2. These are the ordered pair contained in the set. We have to prove that this is reflexive but neither symmetric nor transitive. Reflexive means if every element has itself as a image. तो देखिए वन यहाँ पे सेट में 1, 2, 3 three elements are there. If the image of 1 is 1, 2 is 2 and 3 is 3, then it is reflexive. And see that 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay. So what, since 1, 1, comma 2, 2, comma 3, 3 belongs to R. All the elements, all these elements are belongs to this relation, or which give us what? That the given relation is what? Reflexive. Okay. सारे elements की images itself image itself element है. Okay. So what we conclude that R is a reflexive. Okay. Secondly, symmetric. If A is image of B is image of A and A is image of B. अगर हम ऐसा कर दें, see, 1 is image of 1, then again 1 is image of 1, 1 is image of 2, so 2 is image of 1, then 1 will be image of 2. ये है ही नहीं यहाँ, देखिए, see, since 1, 2 belongs to R, but 2, 1 not belongs to R. ये 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है. हमने क्या पढ़ा था कि AB belongs to R, and if BA belongs to R, then that relation will be what? Symmetric. तो ये 1, 2 belongs to R and 2, 1 does not belongs to R. 2, 1 यहाँ पे कोई भी elements नहीं है. Means this implies what? R is not symmetric. नेक्स्ट वन देखिए, ट्रांजिटिव के लिए सी 1, 2
बिलोंग्स टू आर. अब 2 से स्टार्ट होगा तो 2 बिलोंग्स टू आर. देन फर्स्ट इज 2 एंड लास्ट इज 2. यहाँ हो रहा है 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 बिलोंग्स टू आर. तो फर्स्ट इज 2 एंड लास्ट इज 2. यहाँ भी हो रहा है. मतलब कि आपको फेल्यूर केस ढूंढना है. अगर कोई भी फेल्यूर केस आ जाएगा तो वो हम उसकी हेल्प से प्रूव कर देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है. तो फेल्यूर केस हमारे पास यहाँ है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. सी since what 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 is not belongs to R. This implies R is not transitive. This is not transitive relation. Okay. Example number 5, we have to show that the relation R in Z, Z means set of integer, given by R is AB is such that 2 divides A minus B. Is the difference of A and B is divisible by 2. So see, first of all, we have to prove that it is equivalence relation, means we have to prove it is reflexive, symmetric as well as transitive. So first of all, for all A belongs to the set Z, A minus A will be what? 0, and we know that 0 is divisible by all the numbers, so is divisible by 2, और 2 divides A minus A. ठीक है. और A minus A means क्या हो जाएगा? A belongs to R. Means for all integers, if you find out A minus A means integer minus integer, same integer, what we get? We get 0 and it is divisible by 2. Means what? A belongs to R. Means every integer has itself as a image in this relation. Means this implies R is reflexive. Now, for all A, B belongs to Z, we take the two numbers. If AB belongs to R, if AB belongs to R means what? 2 divides A minus B. If 2 divides A minus B, then this implies 2 also divides B minus A. A minus B को डिवाइड करेगा तो B minus A को भी डिवाइड कर देगा. मान लिया कि 1 minus 3 करेंगे तो 1 minus 2 divides 1 minus 3. तो 2 also divide 3 minus 1. 3 minus 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको भी ये डिवाइड करेगा. ठीक है. और अगर ऐसा है तो क्या होगा? 2 divides B minus A. Here what? 2 divides A minus B. So AB belongs to R. So 2 divides B minus A means what? BA belongs to R. And BA belongs to R means, see, here AB belongs to R and BA belongs to R. Means this is the condition for what? Symmetric relation. So R is symmetric relation. Okay. Now third one, for transitive. So for all A, B, C belongs to Z, we take the three elements. If AB belongs to R, then what? 2 divides A minus B. Means
A minus B is divisible by 2 means we can write it as a 2 into some number, 2 into n. Okay, n is what? Z. N may be any integer. In the same way, and if BC belongs to R, then 2 divides B minus C. Means what? B minus C is equal to 2m, where m is belongs to Z. मीन्स ये 2 इंटू समथिंग होगा. 2 अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसको हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं. वी मे राइट इट एज ए 2 इंटू समथिंग. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस 2, if you will add this 2, taking it as a first relation and second relation, adding first and second, what we have? A minus B plus B minus C is equal to 2. इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2n प्लस n. ये B से B कैंसिल हो गया. क्या बचा? A माइनस C इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस m. और n is integer, m is integer, so n plus m is also integer. Means what? A minus C is divisible by 2. इस स्टेटमेंट से हम क्या ले सकते हैं कि this imply 2 divides A minus C. 2 divides A minus C means what? AC belongs to R. So here what is given? AB belongs to R and BC belongs to R, and we prove that AC belongs to R. Means this imply R is transitive. Okay, so what we prove here? R is reflexive, symmetric and transitive. If a relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then that relation is called equivalence relation. Hence what? R is equivalence relation. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो